So, a very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy, and our new topic is writing off discount or loss on the issue of debenture. So, this is the last topic of this chapter, and you can see that in the last few videos, we discussed a very important chapter, that is chapter number 8, issue of debenture. It is a last chapter of part A, and you can see that the part A will be divided into two parts, the volume 1 and volume 2. In the volume 1, we discussed not for profit organization as well as the accounting treatment of partnership form. In this topic, we discussed the fundamental topic related to the partnership. Thereafter, we discussed number second is reconstitution of partnership firm. Thereafter, we discussed admission of a partnership firm, retirement and death of a partnership firm, and at last, in the volume 1, we discussed dissolution of partnership firm. And in the volume 2, you can see that in the last year, there are basically three chapters are included in the volume 2. The first chapter is issue of share. The second chapter is issue of debenture, and number third chapter is redemption of debenture. So you know very well, due to the COVID-19 situation, CBSE removed one chapter from your volume 2, that is redemption of debenture. So in the volume 2, we have to discuss only two chapters. The first chapter is, that is chapter number 7 is issue and forfeiture of share. And thereafter we discussed the chapter number 8, that is issue of debenture. Okay, so in this chapter, the issue of debenture, we discuss a lots of concept. Okay, so you know very well, in the issue of debenture chapter, it is a 8th chapter of part A, issue of debenture. In this chapter, the issue of debenture, you can see that a lots of topic we discussed. Firstly, we discussed in the issue of debenture, that is issue of debenture issued for a cash, for consideration ration other than cash, as well as you can see that we discussed the issue of debenture as a collateral security. Issue of debenture as collateral security. So these are the three modes by which we issue the debenture to the public: for cash, for consideration other than cash, and issue of debenture as a collateral security. इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर लिया. Thereafter, we discussed the treatment regarding the issue of debenture at par, at premium, and at discount. So if we are talking about the issue of debentures, so you know very well, we issue the debenture by the following three way: at par, at premium, at discount. And in the last few videos, you can see that the accounting treatment related to the interest on debenture. आपने देखा होगा कि वीडियोस में हम लोगों ने इस टॉपिक पे भी डिस्कस किया था, दैट इज हाउ कंपनी पेड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. जनरली कंपनी पेड द इंटरेस्ट ऑन इट्स डिबेंचर फॉर 6 months, and as well as company have a responsibility to pay the income tax on the behalf of debenture holder. यानी डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं. So these are the basic point related to the interest on debenture. As well as in the last video, you can see that issue of debenture on redemption point of view. You know very well, in the last video we already discussed the issue of debenture on redemption point of view. It means when a company issue a debenture, so there are various kind of redemption techniques by which company adopted its debenture to redeem it after a certain period. And you can see that in this topic we have six important points, six important cases. The first is issue at par, redemption at par; issued at par, redemption at premium; issued at premium, redemption at par; issued at premium, redemption at premium; issued at discount, redemption at par; issued at discount, and redemption at premium. So these are the six important cases which are related to the
issue of debenture on redemption point of view, and you can see that we passed different journal entries on the different cases. So I hope अभी तक हम लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, उस चैप्टर्स में हमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे, आई नो वेरी वेल। बट अब हम लोग पहुंच रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। द लास्ट टॉपिक इज राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इट मीन्स अगर हम इस टॉपिक्स को देखें तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इनको मैंने थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर समझाने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी। Okay, and now we will move to the last topic of this chapter. The last topic of this chapter, that is writing of discount or loss on issue of debenture. लास्ट एक वीडियो में मैंने इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज discount or loss on issue of debenture and how company write off the discount or loss on issue of debenture. Okay, so now we will move to the last topic of this chapter, that is writing of discount or loss on issue of debenture. So So as you can see that on your screen, that is the topic is writing of discount or loss on issue of debenture. So before the starting of this topic, I want to introduce the what is the meaning of discount or loss on issue of debenture और इसको write off क्यों किया जाता है. Basically, first of all, we have to knowledge about what is discount or loss on issue of debenture. You know very well there are different situations when company issued its debenture and redeem its debenture. If we are talking about the issue of debenture, so company issued its debenture at par, at premium, or at discount. Okay, and if we are talking about the redemption, so company followed the two types of redemption technique, that is at par or at premium. So you know very well, if company adopt issued at discount, so company face a loss. If a company adopt redemption technique or at premium, that is company face a loss. So if we are talking about the two things, when company issued its debenture at discount or when a company issued a debenture redemption its debenture at premium, so company face a loss, and this is known as the discount or loss on issue of debenture. And you can see that when we pass the journal entries in the question in the last video, you better understand ki how company debit the discount on issue of debenture, how company debit the loss on issue of debenture. So these are the loss. Such of these losses, such of these discounted on the issue of discount, company have a responsibility to write off such discount. उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना कंपनी की सबसे बड़ी जरूरत होती है. अगर कंपनी उन सारी चीजों को राइट ऑफ नहीं करती है तो उसका मतलब वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्टेट द पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन. द पैराग्राफ सेज दैट discount or loss on issue of debenture is a capital loss of the company. It must be written off before redemption of such debenture. According to section 52 of Companies Act 2013, it is allowed to utilize the security premium reserve for writing off the discount or loss on issue of this debenture. Following journal entry will be passed to write off the discount on debenture. तो इसमें कह रहा है कि जब कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है तो उस पर जो भी डिस्काउंट होता है या जो भी लॉस होता है, इट इज अ कैपिटल लॉस एंड इट मस्ट बी राइटिंग ऑफ बिफोर द रिडम्पशन ऑफ सच डिबेंचर. इट मींस डिबेंचर को इश्यू करने में जो भी लॉस या डिस्काउंट हुआ है, कंपनी को उस लॉस और उस डिस्काउंट को रिडम्पशन से पहले राइट ऑफ करना है. रिडम्पशन मतलब जैसे कंपनी ने आज एक डिबेंचर इश्यू किया 10 साल के लिए, तो 10 साल के अंदर फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर टिल द डेट ऑफ द रिडम्पशन, उसके बीच में ही कंपनी को वो लॉसेस को, उस डिस्काउंट को रिडीम करना पड़ेगा, ये कहा गया है. और कंपनीज एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि आप चाहें तो प्रॉफिट में से, यानी जो रेवेन्यू प्रॉफिट होती है उसमें से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम. अब देखा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम याद है. when what is the meaning of security premium? When company issued its debenture at premium, so this is known as the security premium. सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं.
किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर द राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. So let's we move to the methods. If we are talking about the methods of written off of discount or loss on issue of debenture, if we are talking about the methods of और रिटेन ऑफ, यानी कितने मेथड्स हैं जिससे कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करते वक्त जो भी लॉस होता है या जो भी डिस्काउंट हो सकता है उसको कितने तरह से राइट ऑफ कर सकती है. सो दे आर बेसिकली थ्री मेथड्स. सो पहले मैं मेथड्स के नाम बता देता हूं. दे आर बेसिकली थ्री मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज राइटिंग ऑफ equal amount each year. The first method is writing of equal amount each year. यानी कंपनी हर साल इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करेगी. दूसरा मेथड होता है राइटिंग ऑफ, द सेकेंड मेथड इज राइटिंग ऑफ proportionate amount ईच ईयर. यानी कंपनी क्या करेगी, एक साथ सारा पैसा राइट ऑफ नहीं करेगी बट प्रोपोर्शनल अमाउंट में क्या करेगी, राइट ऑफ करेगी. इसको भी मैं समझाऊंगा. नंबर थर्ड मेथड इज रीपेबल ऑफ डिबेंचर. रीपेबल ऑफ डिबेंचर in unequal installment. Okay, so these are the three methods by which company write off or write off discount or loss on issue of debenture. So how many methods? Three methods. The first method is writing of equal amount each year. Number second, writing of proportionate amount each year. And number third, repayable of debenture in equal installment. So आज के इस दोनों वीडियोस में, जो आज मैं पहला वीडियो बनाऊंगा दूसरा वीडियो बनाऊंगा, दोनों वीडियोस में वी कंप्लीटेड द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. एंड 13 अगस्त को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड देयर आफ्टर ऑन 14 अगस्त वी विल मूव टू द पार्ट बी. Okay, so let's we start the first method. The first method is writing of equal amount each year. अब ये मेथड होता क्या है पहले मैं समझा देता हूँ. इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू राइट ऑफ इट्स डिबेंचर. राइट ऑफ करने का मतलब है कि कंपनी ने डिबेंचर को इशू करते समय जितना भी लॉस या डिस्काउंट बियर किया है, कंपनी उसे आज से लेकर रिडम्पशन वाली डेट के पहले तक, यानी टुडे इज 2020 और सपोज कंपनी ने आज 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किया. कितने रुपए का डिबेंचर इशू किया? 1 लाख रुपीस का सपोज. उस पर 10% डिस्काउंट था, यानी 10,000 रुपए. और कंपनी ने 10 साल के लिए इशू किया, तो 10 साल कितना हुआ? 2030. तो 2020 से लेके 2030 तक कंपनी को 10,000 रुपए राइट ऑफ कर देना है. अब किस मेथड से करना है? राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर. अब 10,000 राइट ऑफ करना है, कितने साल के अंदर राइट ऑफ करना है? 10 साल के अंदर राइट ऑफ करना है. तो हर साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? 1,000. ओरली समझ में आ गया कि व्हाट इज राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर. सो आई वांट टू एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the first method, that is writing of equal amount each year. So if the debenture are redeemed after a fixed period in lump sum, the total amount of discount or loss on issue of debenture should be spread over the lifetime of debenture equally. For example, if a company issued 60,000 debenture, at the rate of 100 each at 5% डिस्काउंट. सपोज कंपनी ने 60,000 डिबेंचर इशू किया. एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का. कितने पे इशू किया गया? 5% डिस्काउंट पे इशू किया. ओके, विच आर रीपेबल एट द एंड, विच आर रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर. ये एक एग्जाम्पल समझ लो इस मेथड को लेकर.
Suppose company issued 60,000 debenture at the rate of 100 each at 5% discount, which are repayable at the end of 5 years. यानी जिसे कंपनी 5 साल बाद क्या करना चाहती है, रिडीम करना चाहती है आफ्टर 5 years. So first of all आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाउ कंपनी ने कितना डिस्काउंट बियर किया, कंपनी को कितना लॉस हुआ. सो यू कैन सी दैट 60,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर, that is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, that is 60 lakh rupees डिबेंचर. लॉस कितना हो रहा है, 5%. सो डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग. डिस्काउंट इक्वल्स टू 60 lakh into 5%. So the value of discount will be 30, 1 2 3 4 2 3 4. So the discount on issue of debenture will be 3 lakh. And you know very well कंपनी कितने साल बाद रिपेबल करना चाहती है, 5 साल बाद. यानी उसे हर साल कितना रुपए डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा. यू कैन सी दैट कंपनी 30,000 रुपीज, 3 लाख रुपीज का लॉस बियर कर रही है. इस लॉस को कंपनी क्या करेगी, 5 साल के अंदर उसे राइट ऑफ करना है. तो ईच ईयर कंपनी कितना रुपए राइट ऑफ करेगी. इफ आई अगर मैं पूछूं आपसे, इन दिस सिचुएशन कंपनी कितना रुपए राइट ऑफ करना चाहेगी. इन दिस सिचुएशन कंपनी राइट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट राइट ऑफ every year. ठीक, every year. I want to this thing on the top of the board. इसको मैं यहां ना लिख के यहां लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अमाउंट रिटेन ऑफ ईच ईयर, कितना रुपए इस कंपनी हर साल राइट ऑफ करेगी. तो यू कैन सी दैट कंपनी को लॉस कितना हुआ, 3 लाख. कितने साल में राइट ऑफ करना है, 5 साल में. तो द अमाउंट राइट ऑफ ईच ईयर दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय 5. सो कंपनी राइट ऑफ 60,000 amount of discount on issue of debenture. It also means the loss on issue of debenture for the 5 year, that is 60,000. So company write off कितना साल write off करेगी, 60,000 60,000 60,000 5 साल तक write off कर देगी 60,000 रुपए. And you can see that जब कंपनी रिडीम करने जाएगी तो उसके पास कोई लॉस अवेलेबल नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच कंपनी राइट ऑफ issue of debenture, write off discount or loss on issue of debenture in equal proportion, that is equal amount each year. So this is the first case. So let's we take the one question for creating a better understanding regarding the first method of writing off loss or discount on issue of debenture. So the first question is, on 1st January 2010, X Limited Company Limited issued 12% rupees 1 lakh debenture at a discount at the rate of 3%, repayable at the end of 3 years. Okay, so question is, on 1st January 2010, X Company Limited issued, sorry यहाँ पे issued word होना चाहिए, issued 12% rupees 1 lakh, 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, नॉट नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, 1 लाख रुपए का डिबेंचर एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, रीपेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर. क्वेश्चन में बोला है पास एंट्रीज and prepare discount on debenture account, discount on debenture account for 3 years. कह रहा है 3 साल के लिए एंट्री पास करिए और 3 साल के लिए क्या करिए, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करिए. सो सोचने में तो बहुत डाउट लग रहा होगा कि सर बहुत टफ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी. Because you can see that in this question, if you are talking about the solution, so you can see that
इन दिस क्वेश्चन कंपनी कितने रुपए का डिवेंचर इशू करी है? 1 लाख रुपए का। उस पर डिस्काउंट कितना है? 3%। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सो इन दिस सिचुएशन कंपनी को डिस्काउंट कितना बेयर करना पड़ रहा है? 1 लाख इंटू 3%। सो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी 2020, दैट इज 3000। सो कंपनी को डिस्काउंट कितना बेयर करना पड़ा है? दैट इज 3000। ओके, एंड नाउ यू नो वेरी वेल अमाउंट कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? द अमाउंट राइट ऑफ एवरी ईयर, हर साल कितना रुपए डिस्काउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कंपनी राइट ऑफ द डिस्काउंट दैट इज 3000। डिस्काउंट हुआ और कितने साल बाद रीपेबल करना है, कितने साल बाद रिडम्पशन करना है? 3 साल बाद। सो कंपनी को हर साल कितना पैसा राइट ऑफ करना पड़ेगा? 1000 रुपए डिस्काउंट का राइट ऑफ करना पड़ेगा। तब जाकर, क्योंकि 2010 में इशू है तो रिडम्पशन कब होगा? 1 साल बाद, 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012। तो 2012 तक आते आते डिस्काउंट क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट कंपनी को हर साल 1,000 रुपए राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? मैंने आपको इमेज शेयर करके दिखाया था। राइट ऑफ की एंट्री होती है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब मैं जर्नल एंट्री पास करता हूं तो आपको पता चल गया कि हर साल राइट ऑफ करना है 1,000 रुपए, टोटल डिस्काउंट आया था 3,000 रुपए। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं। जर्नल एंट्री क्या होगी? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि सीधे डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। गलत। कंपनी ने डिबेंचर इशू भी तो किया है, तो पहले इशू की एंट्री होगी। और ये कौन सा सिचुएशन है? इशू किस पे हो रहा है? 3% डिस्काउंट। रिडम्पशन बस बता रहा है 3 साल बाद है। प्लीज लिसन केयरफुली। In this question, company is asking about question is telling about the issue of debenture at 3% discount, but redemption after 3 years, but there's a no information कि discount redemption किस पे हो रहा है? पार पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है कि डिस्काउंट पे हो रहा है? तो जहां पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम डिबेंचर किस पे रिडम्पशन कर रहे हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, सो हम क्या है? पॉजिटिव वे को लेके चलते हैं। हम हमेशा क्या लेके चलेंगे कि वी रिडीम द डिबेंचर एट पार। व्हेन देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन, सो हमेशा डिबेंचर किस पे रिडम्पशन होता है? पार पे। सो दिस इज अ सिचुएशन इशूड एट इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा है, सो वी एज्यूम दैट रिडम्पशन किस पे होगा? पार पे। लिखा होता एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो फिर हमें वही जो मैंने अभी इससे पहले आपको टॉपिक बताया है वो आपको करना पड़ता है। इसलिए दैट्स व्हाई आई विल टेल दिस टॉपिक एट लास्ट ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब मैं इस चैप्टर को सबसे लास्ट, इस टॉपिक को इस चैप्टर के सबसे लास्ट में इसीलिए बता रहा हूं। तो यू कैन सी दैट 1 जनवरी 2010 को कंपनी पहले एंट्री पास करेगी विद अ प्रॉपर फॉर्मेट आप लोग बनाओगे। तो 2010 जनवरी 1 में कंपनी ने क्या इशू किया? डिबेंचर। इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, तो फर्स्ट एंट्री विल बी एंड इशू कितना किया? 1 लाख रुपए, 3% डिस्काउंट पे। तो 1 लाख में 3% कट गया कितना? 3000। तो कंपनी को मिला कितना होगा इशू के टाइम पे? 97,000, क्योंकि इशू है डिस्काउंट पे। And you know very well, second entry will be on the same date, that is 12% debenture application and allotment account debit to 12% debenture application allotment पे मिला कितना? 97,000। एक्चुअल वैल्यू है क्या डिवेंचर की? दैट इज 1 लाख। 3,000 will be adjusted with the discount on issue of debenture। अब आपको दिख गया होगा डिस्काउंट कितना है कंपनी के पास? 3,000 रुपए। एंड नाउ हर साल ये इशू की एंट्री हो गई। अब यू नो वेरी वेल 3 साल तक कंपनी क्या करेगी? इस 3,000 रुपए को हर साल 1,000 रुपए राइट ऑफ करेगी। सो देयर आफ्टर कंपनी क्या करेगी? इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हर 3 साल तक राइट ऑफ करेगी। ओके, सो 2010 दिसंबर 31 को कंपनी सबसे पहले राइट ऑफ करेगी और राइट ऑफ की एंट्री होती है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू discount on issue of debenture, and amount will be 1,000. Thereafter again
2011 December 31. Again company passed same entry, that is statement of PL to discount on issue of debenture, again 1000. And again company 2012 December 31, company passed the entry statement of PL debit to discount on issue of debenture, that is 1000. So you can see that कंपनी ने 3 साल में क्या कर दिया, डिबेंचर को राइट ऑफ कर दिया. Okay, so this is the 3 entries which are related to the right of the issue of debenture. So first of all we pass the journal entry related to the issue of debenture. Thereafter company pass the journal entry related to the writing of the debenture, writing or discount of the debenture, that is 1000 1001. 3 साल हो गया, खत्म हो गया, राइट ऑफ हो गया. And now we will move to the preparation of discount on debenture account. So you can see that we passed the 5 entries related to this question. So first of all, the entry will be bank account debit to 12% debenture application allotment. The second entry will be bank debenture application allotment account debit, discount on issue of debenture account debit to 12% debenture. And thereafter you can see that the 3 entries. The entry number 2 में आप लोगों ने देखा होगा discount account will be debited. Instead of, you can see that the entry number 3, 4 and 5, you can see that discount on issue of debenture will be credited. So entry number 1 में आपने देखा ये कि डिस्काउंट डेबिट हुआ है, और एंट्री नंबर 2 में आपने देखा होगा डिस्काउंट डेबिट हुआ है, और एंट्री नंबर 3, 4, 5 में डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है. तो जब हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ऑफ दिस टॉपिक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर? The format of discount on issue of debenture account is same as like in the debenture. जैसे debenture में format बनता था ना, वैसे ही बनेगा. The format will be date particular amount, date particular amount. The format is date particular amount, date particular amount. So you can see that the first entry, that is 2010 January 1, discount will be debited. Discount debit हुआ था to 12% debenture. And what is the amount of discount? That is 3000. At the end of the first year, that is 2010 December 31, we write off 1000 amount of debenture. Means डिस्काउंट का 1000 रुपए हमने पहले साल क्या कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया. किस नाम से? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल. 1000 रुपए राइट ऑफ किया, तो पहले साल बैलेंस कितना बचा? 2000. तो पहला साल कंप्लीट हो गया. फिर इसी 2010 का नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? 2011 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना आया? 2000. फिर 2011 के एंड में दिसंबर 31 को फिर हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया. 2000 में से नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कितना राइट ऑफ किया? 1000 रुपए. अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? बैलेंस विल बी 1000. तो देख रहे हो आप लोग हाउ वी विल प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. एंड ऑन 2012 जनवरी 1 को फिर हमने राइट बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, that is 1000. And at the end of third year, it means before the redemption of debentures, 3 साल में रिडम्पशन होने वाला था, और 3 साल के पहले ही हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया. And you can see that there is a no balance in discount on issue of debenture before the redemption of debenture. क्योंकि रिडम्पशन का डिबेंचर कब करना, डिबेंचर का रिडम्पशन कब करना था? दिसंबर 2012 में करना था. और दिसंबर 2012 तक हमने 1000 1000 1000 करके
3 साल मिलाकर हमने पूरा डिवेंचर का डिस्काउंट खत्म कर दिया. So you can see that in this video, first of all, we can see that the three important method by which we write off the discount on issue of debenture or loss on issue of debenture. And in the first situation, in the first question, you can see that how companies write off discount or loss on issue of debenture by the first method. The first method is writing off amount of discount on debenture in equal installment. So you can see that इसमें हर साल हम equal amount write off कर रहे हैं. इस साल आप क्या कर रहे हो, हर साल equal amount write off कर रहे हो. So I hope in today's video we discussed a lots of topic very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.